Welcome all. So today in our electrical machine lab we will discuss the voltage regulation of a single phase transformer. So see, this is the aim of your experiment. Determine the voltage regulation of single phase transformer are different loads. So we have a load box, we have a resistive load box. So we will vary the load. For varying the load, we will determine the voltage regulation. Okay. So this is our objectives. On the completion of this experiment, the students must be able to find the LT and ST side of the transformer. You know, low tension LT means low tension and ST means high tension. So high voltage side, low voltage side. The student must be able to find that. And next is we have to take the reading of voltage at current at full load. So a different load or full load, we will take the readings of voltage and current. So before going to voltage regulation, I will clarify you why we are going to calculate the voltage regulation and what actually the voltage regulation is. So see, this is the transformer. Actually this is the ideal transformer. Before going to study, before our performance analysis of transformer, first of all we have studied in our classroom ideal transformer. So ideal transformer means transformer at its basics without any losses. So see here, so this is called an ideal transformer. So first of all what we have done is, first of all we have given supply, AC supply to transformer winding, primary winding. So after giving supply, current starts flowing. Because of that current, flux will be developed, and the same flux will link the primary as well as secondary winding through transformer core. You all know this very well. And because of this time varying flux, because supply voltage is time varying AC in nature and current is time varying AC in nature, and flux is also time varying AC in nature, and because of that and Faraday's laws of electromagnetic induction, here one EMF is induced, the name is E1. So what is Faraday's laws of electromagnetic induction? E is equal to N d phi by dt. So when EMF will be induced, when the winding have number of turns and flux must be vary with respect to time. So according to that, here one EMF will be induced depending upon number of turns E1, and the same flux will travel to the secondary side. Here also one EMF will be induced. It is called E2. And if we connect a load here, then we will find a terminal voltage as V2. So this is the very basics of transformer. And here see here I have drawn the parameters. I have shown different parameters, and this is called exact equivalent circuit of a transformer. Got it? So see, this is called series branch parameter, and this represents you know this two losses are there in transformer, core losses and copper losses. So these are called core component, and these are called series components. So know this very well. And these are linear components, these are called parallel components. So this is called primary and this is secondary. Got it? So basically transformer means there are two types of transformer. One is our usual distribution transformer you are seeing in your locality. Another is power transformer you are seeing in the substation. So here the voltage regulation will calculate for distribution transformer. So what the difference is, see here. So this is called secondary induced voltage E2, as E2 is here, this is called secondary induced voltage E2, and this is called terminal voltage at load. If you connect a load here, see, if you connect a load here, this is called the terminal voltage of load. So what will happen is, in our distribution transformer, what happens, if we take an example, if you switch on AC, suppose if you switch on any motor load, so what will happen, this voltage will be not same as the secondary induced voltage. So you will see in practical, if you not connect any load, I repeat, if you not connect any load, this V2 and U2 will be in same in distribution transformer. Got it? And if you connect any load or switch on load, switch off load, so depending upon our load variation, the V2 will vary. So that variation we will determine here as a percentage voltage regulation. It is called no load voltage minus full load voltage with respect to no load voltage in 100.
E2 we will find because E2 is constant always and this V2 is variable. In distribution transformer I am telling. So actually in calculation you will find E2 minus V2 by E2 into 100. So how can we calculate E2? We will connect at no load. At no load in secondary side we will determine with the help of a voltmeter E2. Then when we connect the load at different loads we will find V2. Then E2 minus V2 by E2 into 100. This is called voltage regulation. And remember, our voltage regulation must be as small as possible, but efficiency must be as high as possible. Because see, why we are calculating this is this variation of voltage will be influenced upon the insulation of the transformer. The secondary winding of some insulation, no? If there is more variation, then there is a pressure on the insulation. Suppose in evening time, you know, in evening time all lighting loads are turned on. In highway you are seeing, in home you are seeing. So at this time the variation will be more. In the morning time also. So at that moment you have to calculate how much variation is there from no load to different loads or no load to full load. But remember, in power transformer this voltage does not vary. In power transformer, remember, this voltage always remains same, because power transformer always operated at full load. Because if you switch off your any load, other side of the any of your, suppose you are setting in your Bhubaneswar area, let's say, so in a Bhubaneswar there is, let's say there is one power transformer. So if you switch off your load in CRB square, another person can switch on the load in Noaipalli square. What you know? So power transformer always have the more catchment area. That's why power transformer always operated at, remember, full load. So if voltage variation occurs, then there is an on-load tap changer. The on-load tap changer maintains this voltage constant. What you know? But remember, our distribution transformer does not operate always at full load. It depends upon a people's load. So how we can use our load? It depends. This voltage depends upon that. So we will calculate here voltage regulation of distribution transformer. So in distribution transformer, this voltage varies at different load. So that's why we will calculate voltage regulation. Okay. So see here, this is your connection diagram. P stands for primary, A stands for secondary. So you can take, suppose let's say this is a 220 by 110 volt transformer. We can take any. You can, if I will take this primary, then it will be secondary. If I take this as primary, then it will be secondary winding. Got it? So in primary winding, we will, if you primary winding means we are giving supply. The winding in which we give supply, this is called primary winding. So we will connect an ammeter and voltmeter, and secondary side we will connect an ammeter also and voltmeter. You know, ammeter is connected in series with the load and voltmeter is connected in parallel with the load. So this in no load condition will determine voltage from here. By giving variation load, we will also determine voltage from the secondary side of transformer. By calculation of two different voltages from no load voltage and voltages different loads, so we will find the no load voltage minus full load voltage by no load voltage in 100. Got it? So remember, this voltage regulation what we are seeing is E2, see here, E2 minus V2 by E2 into 100. Got it? So E2 minus V2 by E2 into 100. So see here, E2 minus V2 by E2 into 100. In case of distribution transformer, if it was alternator, then here in case of E2 I will write V2. So in case of alternator or in case of power transformer. Okay. So as it is distribution transformer, there will be E2 minus V2 by E2 in 100 because E2 is constant. With respect to E2 voltage, we will find the voltage regulation. Our practical class. So today our aim of the experiment is to determine the voltage regulation of single phase transformer at different load. तो से आम कौन कर गोटे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर नीचे गोटे वेरिएक नीचे प्राइमरी साइड आम सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी साइड रे गोटे एमिटर लगे सेकेंडरी साइड रे एमिटर लगे आम लैंप लोड नीचे ये आम
मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर नीचे जोटा कि आम यूज करवा एज ए वोल्टेज चेक करवा सेकेंडरी साइड तो फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्शन आम देखा कनेक्शन रे आम गोटे भेरियाक कौन कर पॉजिटिव टर्मिनालटा आसी भेरियाक फेस टर्मिनालटा आसी कमन लगी एमिटर देन आउ गोटे आमर 2 रे जो आम 2.5 ये एमिटरटा आमर 2.5 एम्पियर भी मेजर कर अप टू एंड 5 एम्पियर भी मेजर कर तो 2.5 रु आम नहींचे यहाँ को 250 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी साइड देखा तार गोटे टर्मिनाल सहित लगे आगेन आउ गोटे टर्मिनाल आमर आसी क्या सहित लगी भेरियाक सहित लगी ठीक सेमती सेकेंडरी साइड भी आमर सेकेंडरी साइड आमर अच्छी 110 वोल्ट समस्त देखा 110 वोल्टर गोटे टर्मिनाल जाइए एमिटर कमन पॉइंट सहित लगी से एमिटर भी ये भी आमर 2.5 और 5 एम्पियर अच्छी 2.5 रोटे लगी आम क्या सहित लोड सहित लोड रे आमर जेहेतु ये 3 फेज रे लोडटा तो गोटे फेज आमको दरकार जेहेतु सिंगल फेज तो आर सहित लगी एन टर्मिनालटा आसी क्या सहित लगी ट्रांसफॉर्मर आ गोटे टर्मिनाल सहित तो आम वोल्टेज चेक करवा जेहेतु आम जानी एमिटरटा सीरीज कनेक्टेड आ वोल्टमीटरटा आम पैरेलल कनेक्शन तो आम वोल्टमीटर चेक कला आम डायरेक्ट पैरेलल कनेक्शन करके देखिपर सो फर्स्ट ऑफ ऑल आम सप्लाई ऑन कर सप्लाई ऑन कला आमर रियोस्टाट को सप्लाई आसी तो आम ये देखुचे आमर मीटर गुड़ाक किसी भी रीडिंग करूनी कहीं आमर भी लोड ऑफ अच्छी लोड किसी भी ना तो लोड ऑन करके आम गोटे गोटे देखा कौन रीडिंग आमर आसूची तो तुमने देखो ये जो ट्रांसफॉर्मर है आम ट्रांसफॉर्मर 220/110 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर सो ये आम 220 वोल्ट रे प्राइमरी रे सप्लाई देचे प्राइमरी आ 110 वोल्ट को आम सेकेंडरी नहीं सो आम भैरियाक यूज करते जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर भैरियाक देखो भैरियाक यूज करके आम केते वोल्टेज रे सेट कर अराउंड 200 वोल्टेज आम सेट कर देखो भैरियाक यूज करके अराउंड 200 वोल्ट आम सेट करचे प्राइमरी रे ना तो प्राइमरी 220 वोल्ट अच्छी भैरियाक यूज करी 200 वोल्ट सेट करचे अब देखो सेकेंडरी रे नो लोड अच्छी आम लोड किसी कनेक्शन करने ये देखो ये तुम लैंप लोड तुम लैंप लोड अच्छी सो आम लोड स्विच ऑन करके डिफरेंट लोड गोटे यूनिट स्विच ऑन करके 200 वाट बल्ब स्विच ऑन करके आम ये टर्मिनाल वोल्टेज देखा केते ड्रॉप हो तो फास्ट आम नो लोड देखा एवं किसी लोड कनेक्शन करने आम नो लोड कंडीशन अच्छी सो तुम देख ए किसी भी लैंप ग्लो करनी नो लोड कंडीशन अच्छी सो ये देख लोड स्विच भी ऑफ अच्छी ये लोड स्विच भी ऑफ अच्छी सो नो लोड कंडीशन ने आम वोल्टेज मेजरमेंट करवा सेकेंडरी टर्मिनाल केते होची फाइनल देखा तो समझ देखो नोडल वोल्टेज आसुची अराउंड 89.7 और 90 समथिंग नोडल वोल्टेज ये सेकेंडरी वोल्टेज है तो देखो नोडल वोल्टेज रखचे 89 और लेट से 90 ओके सो अबे हमें डिफरेंट लोड्स दबा तो डिफरेंट लोड्स हमें इंक्रीज करवा तो देखो लोड स्विच ऑन है लोड स्विच ऑन है देखो गोटे लोड ऑन अच्छे एक्चुअली 7 नंबर स्विचटा खराब हो जाए देख गोटे लोड ऑन अच्छी तो तुम देखो बल्बटा टी डीम जलुची कहीं 110 वोल्ट सप्लाई देचे से आम सेकेंडरी 110 वोल्ट अच्छी ना सो तुम देख पार्छ ये करेन्ट भी इंक्रीज है सम अमाउंट करेन्ट फ्लो है 0.4 एम्पियर सो अर्लियर नो लोड रे 0 करेन्ट थिला सेकेंडरी रे तो करेन्ट भी इंक्रीज है अब देख सेकेंडरी टर्मिनाल वोल्टेज के आसो देख तो देखला 89.0 और अराउंड 88.9 और 89 सो 1 वोल्ट कम हो गला तो देख पार्छ जो तुमको कही सेकेंडरी वोल्टेज रे सेकेंडरी वोल्टेज कम हो लसेस होना E2 और V2 तो सामान के हेनी तो देख सेकेंडरी वोल्टेज कम है अब देख लोड आम इनक्रीज करवा पुणी देख आ गोटे लोड देख आ गोटे लोड इनक्रीज कले आम देख दीटा बल्ब जलुचे देख समस्ते से गोटे बल्ब ये गोटे बल्ब जलुचे सो ये लोड होगा 400 वाट लोड सो ये वोल्टेज देख एगेन डिक्रीज है 87.8 और लोड मीन्स करेन्ट देख
सो लोड सिनोनिम इज करेंट ना करेंट डिमांड बढ़ला देख करेंट फ्लो होला केते अराउंड 0.9 एम्पियर। तो देख अगेन हम लोड को इंक्रीज करवा देख अगेन आ गोटे बल्ब को आम स्विच ऑन कले सो ये टोटल लोड अच्छी ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी रे 600 वाट और पावर फैक्टर नंबर 1 अच्छे रेसिस्टिव लोड। सो देख वोल्टेज देख 87.0 सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज आपको तुम करेंट देख करेंट इज 1.3 एम्पियर। सो आम लोड इंक्रीज कले करेंट भी इंक्रीज हो सेकेंडरी रे और वोल्टेजटा ड्रॉप हो। सो अगेन आ गोटे लोड देख आ गोटे लोड ऑन कले सो इच मन रख यहाँ इच स्टेप हूँ 200 वाट। सो देख आ गोटे बल्ब ऑन है ये सो टोटाल 4टा बल्ब ऑन अच्छी टोटाल वाटेज है 800 वाट्र। सो वोल्टेज देख तुम मैंने आउट डिक्रीज है 86.0। सो ये देख तुम करेंट भी इंक्रीज होगा अराउंड 1.7 प्लस। सो जो वोल्टेज वेरिएशन तुम देखो जेहेतु यहाँ आम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो तुम मैंने थ्योरी कहली ये वोल्टेजटा वेरिएशन हो मन रख जब यहाँ पावर ट्रांसफॉर्मर होता बिग ट्रांसफॉर्मर जो सबस्टेशन लगाई था ताले केबे भी ये वोल्टेजटा वेरिएशन हेनी कहीं पावर ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज ऑपरेटेड फुल लोड से ऑनलोड टैप चेंजर थाए जोटा कि वोल्टेज को मेंटेन करे। तो से आम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन करवा। तो ये है तुम ऑब्जर्वेशन टेबल निहाई आम जहाँ भी प्रैक्टिकल कले तो ऑब्जर्वेशन टेबल तुम कौन कर आम सीरियल नंबर सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी करेंट लोड आउ पावर फैक्टर निहाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आम नो लोड रे तुमको देखी आम वोल्टेज केते नो लोड रे आम वोल्टेज आसला 90.8 वोल्ट। तो धीरे धीरे आम कौन कले लोड दे चलले बढ़े बढ़े चलले 200 400 तो से हिसाब से आम देखिले वोल्टेज कौन हो ड्रॉप हो चलती किंतु करेंट रो वैल्यू कौन होता सेकेंडरी करेंट रो वैल्यू इंक्रीज हो चलता। तो जेहेतु आम एटा रेजिस्टिव माने लैंप लोड थिला रेजिस्टिव लोड से पावर फैक्टर सबुतिर कौन हो यूनिटी पावर फैक्टर हो। तो ये जो रीडिंग रू फर्स्ट जो आम नो लोड वोल्टेज बाला से इटू आम करवा तो इटू है आम 90.8 वोल्ट। बाकी तो मान परसेंटेज रेगुलेशन जो कैलकुलेशन कर इटू माइनस V2 बाय इटू इंटू 100 तो ये जगह आम इटू क्या नवा 90.8 वोल्ट को आ V2 हिसाब से आम क्या नवा 89.3 बाकी जहाँ भी वोल्टेज अच्छी तुम से हिसाब से V2 को लेकिन कैलकुलेशन निजे कर। सो इटू माइनस V2 बाय इटू है तो इटू है आम 90.8 V2 है 89.3 एंड देन अगेन डिवाइडेड बाय इटू माने 90.8 नहीं कि आम कौन करिया कैलकुलेशन करवा।